Long composition had 4 parts. Short composition also had 4 parts. Among the 4 segments in long composition, we have to prepare, we are to understand, to learn 2 segments. First one we have already done, and that was article lake. Now we come to the second segment of long composition. What is that second segment? It is called speech. Speech यानी भाषण. I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Five score years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. Speeches by Pandit Jawaharlal Nehru are world famous. So is the speeches by Aristotle, by Winston Churchill, and many more, by John F. Kennedy, by Martin Luther Jr., and so on and so forth. So there are speeches, and speech writing is an art. भाषण लिखना एक कला है. भाषण लिखना एक कला है. Speech writing is an art. ये कोई सरल काम नहीं है, टेढ़ी खीर है, बट इट इज पॉसिबल. और अभी से यदि आप प्रैक्टिस करेंगे स्पीच लिखने की, तब जाके आप आगे अच्छी स्पीच लिख पाएंगे. राइटिंग इज स्पीच इज एन आर्ट, एंड स्टिल बिगर आर्ट इज डिलीवरिंग द स्पीच. भाषण लिखना एक कला है और वक्तृत्व कला दूसरी कला है. लिखी हुई चीज को बोलना, संबोधित करना, वह अलग चीज है. इन ए क्लासरूम एवरी ईयर यू आर टॉट बाय 5 टीचर्स मिनिमम. किसी भी कक्षा में आपको मिनिमम 5 टीचर पढ़ाते हैं, 5 अलग अलग विषयों के. लेकिन उसमें से कुछ टीचर आपको बिल्कुल पसंद नहीं आते. एक आध की शैली पढ़ाने की इतनी अच्छी लगती है आपको कि आप बिल्कुल उनकी क्लास को छोड़ना नहीं चाहते. क्यों? क्योंकि उनकी बोलने की शैली बहुत अच्छी. अटल बिहारी वाजपेयी, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द लेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वॉज वेरी फेमस फॉर हिज स्पीचेस. वो जब बोलते थे तो लाखों की जो जनता थी उसमें पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था. सो स्पीच writing is an art. Speech delivery is also an equally important art. Right here we are concerned with speech writing, but that does not mean that you don't read books of great speakers. You must read. Okay, so here we come to learn something about speech making, speech writing. What is the format of a speech? As I told you in the beginning, that speech is nothing but a verbal expression. Article is nothing but a written expression. Speech is a verbal expression. मौखिक अभिव्यक्ति है, स्पीच कहलाती है. और speech should be short and crisp. Speech should be to the point, and speech should be on the topic only. You should not deviate left, right and so on. आपको अपने बिंदु पर ही अपना भाषण केंद्रित रखना चाहिए. इन अदर वर्ड,
Here you will learn through exercises the art of writing a speech. As a student of a school, you are hearing the speeches of on 15th August, 26th January, annual function, different competitions, inter-school competitions, some VIPs coming to your school and speaking, and then on few more occasions. As a student, as head boy, as head girl, as class captain, school captain, house captain, you are also required to give a speech. यदि आप स्कूल कैप्टन हैं, क्लास कैप्टन हैं, हाउस कैप्टन हैं, तो आपको भी कई बार भाषण देना पड़ता होगा और देना पड़ेगा स्कूल में। और अच्छे विद्यार्थी इन मौक़ों की ताक में रहते हैं कि कब भाषण दें, भाषण देने का मौका कब मिले। सो हाउ टू राइट स्पीच, क्या क्या चाहिए उसमें, इन बिंदुओं को लेके मैंने पहले आपको बता दिया कि उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। नाउ लेट अस डू 1 or 2 exercises on speech making, speech writing. Remember, speech is verbal expression. तो जो चीज़ आप वर्बली बोलेंगे उसको पहले लिखना ज़रूरी है ना। You have to put it in writing. आपको एक दिशा बनानी पड़ेगी। So here is, as per the board, a question on speech making. What is the question? प्रश्न क्या है? Write a speech of about 150 to 200 words on the topic. A student must know how to manage time. What is the topic? A student must know how to manage time. ख्याल करें, जो भी टाइटल्स हैं वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में रहती है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रहती हैं, वो टाइटल्स है। तो टाइटल या शीर्षक क्या है कि हाउ ए स्टूडेंट मस्ट नो हाउ टू मैनेज टाइम। एक विद्यार्थी को मालूम होना चाहिए कि वह समय को कैसे मैनेज करे, टाइम मैनेजमेंट कैसे करे। अर्थात यदि उसके पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो इस 24 घंटे का सबसे बेहतर उपयोग कैसे करे, समय को कैसे बांटे, इस पर आपको भाषण देना है और उसकी तैयारी करनी। दिस स्पीच इज टू बी डिलीवर्ड इन द मॉर्निंग असेंबली। Examiner says that you have to write a speech of 150-200 words on a student must know how to manage time. That is the topic. And when do you have to speak? कहाँ बोलना है? मॉर्निंग असेंबली में। कहाँ? आपके स्कूल में। आपका नाम क्या रहेगा? नताशा। आपका नाम रहेगा नरेश, और आप या तो हेड गर्ल हैं या हेड बॉय। दूसरे शब्दों में, when you write answer to this question, you are writing not as what you are. आप जब इसका आंसर लिख रहे हैं तो आप आंसर अपने नाम से नहीं लिख रहे हैं, याद रखेंगे। फिर वही बात जो मैंने लेटर्स में बताई, जो मैंने नोटिस में बताई, नाम जो यहाँ दिया हुआ है उसके आधार पर लिख रहे हैं। मैंने आर्टिकल में बताया, यहाँ फिर दोहरा रहा हूँ, नाम दूसरा रहेगा छद्म नाम, वो नाम जो बोर्ड देता है। आपको लिखना होगा राइटर्स नेम इज नताशा नरेश। ए स्टूडेंट मस्ट नो हाउ टू मैनेज हिज टाइम। तो सबसे पहले जब आप एड्रेस करते हैं तो सबसे पहले वेलकम करते हैं, विश करते हैं, ग्रीट करते हैं। फॉर्मेट की यदि मैं बात करूं तो भाषण में सबसे पहले आप ग्रीट करते हैं, विश करते हैं, और सबसे आखिरी में आप धन्यवाद देते हैं। ये हुआ फॉर्मेट, बिगिनिंग एंड एंड। धन्यवाद किस बात का? आपको ये भाषण देने का मौका मिला और आपने हमको ध्यान से सुना। आपने सुना होगा सभी लोगों को ऐसा कहते हुए। तो ऐसे ही यहाँ पे एट द एंड यू विल बी थैंकिंग द लिसनर्स फॉर गिविंग टाइम टू हियर यू पेशेंटली, एंड एट द बिगिनिंग यू विल बी थैंकिंग, यू विल बी वेलकमिंग or addressing, wishing them greetings like good morning dear friends, good morning all of you present here,
Today, you can say Natasha, the head girl, is here to speak or share my views on the topic how to manage time. A student must know. यदि दूसरे शब्दों में क्या, इस टाइटल का अर्थ ये है कि यदि मैं विद्यार्थी हूँ तो मुझे टाइम मैनेजमेंट मालूम होना चाहिए, अन्यथा मैं विद्यार्थी नहीं हूँ। विद्यार्थी होने के लिए टाइम मैनेजमेंट की समझ होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ द टॉपिक, एंड सो दैट इज़ हाउ टू स्टार्ट। यू ऑलवेज स्टार्ट बाय ग्रीटिंग्स। आप विश करते हो, विश करने के बाद फिर आप बताते हो कि मुझे आज जो बोलने का मौका मिला है वो इस टॉपिक पर है और इस पर मैं मेरा जो व्यू है वो मैं आपके सामने रखूँगा। इट इज़ अ वेल नोन प्रॉवर्ब। अब इसमें कुछ बिंदु बोल सकते हैं। कौन कौन से बिंदु बोलें? यदि टाइम की बात हो तो एवरीवन नोज दैट टाइम रुकता नहीं, तो एक आध मुहावरा उस पर बोला जा सकता है। यदि टाइम की बात हो तो आप जानते हैं कि समय बड़ा बहुमूल्य होता है। सो यू कैन से टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। उसमें आप ये लाइन डाल सकते हैं, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। देखिए WAITS लिखा है। टाइम एंड टाइड बहुवचन है। बहुवचन होने पर क्रिया में S नहीं लगता, लेकिन ये पुरानी इंग्लिश है इसलिए, और मुहावरा है, मुहावरे को हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसमें S लगा हुआ है। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। ख्याल रखेंगे। तो एक बात हमने और सीखी कि एक वचन होने पर क्रिया में S लगता है, एक्शन वर्ब में S लगता है, और बहुवचन होने पर एक्शन वर्ब में S नहीं लगता। टाइम और टाइड एक है कि दो है? दो हो गया, तो S तो नहीं लगना था, लेकिन पुरानी अंग्रेजी है इसलिए S लगा है। राइट? सो टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, एक मुहावरा तो ये है। दूसरा, आप उसके टाइम की वैल्यू पे बात कर सकते हैं। टाइम इज़ मोर प्रेशियस दैन मनी। प्रेशियस मतलब बहुमूल्य। प्रेशियस स्टोन होता है ना, PRECIOUS, प्रेशियस स्टोन। समय जो है वो पैसे से ज़्यादा मूल्यवान है। समय जो है पैसे से ज़्यादा मूल्यवान है। थर्ड, यू कैनॉट गेट द टाइम बैक। क्या समय को आप वापस पा सकते हैं? नहीं। एक बार जो समय निकल गया उसे दोबारा नहीं पाया जा सकता। ये तीन मुहावरे लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं और यू कैन स्टार्ट गिविंग योर व्यू दैट टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। In this fast competitive world, time lost means opportunity gone. ऐसी दुनिया जहाँ पे हर क्षण बदलाव हो रहा है, जहाँ हर क्षण प्रतियोगिता है, कट थ्रोट कंपटीशन है, गला घोंट प्रतियोगिता। गला घोंट को क्या बोलते हैं? कट थ्रोट कंपटीशन। जहाँ गला घोंट प्रतियोगिता है वहाँ पर हर क्षण बहुत मूल्यवान है, और क्षण जो निकल गया वो हमेशा के लिए चला गया। Each of us have 24 hours at our disposal. Each of us has 24 hours. Us जो है बहुवचन है। Us, US, us मतलब हमें। We are feel us. Give it to us. ये हमें दें। They called us. उन्होंने हमें बुलाया। तो अस बहुवचन है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर देखिए एक सिंगुलर, एक जो क्रिया है उसमें ईच ऑफ अस हैज़ 24 आवर। हैव नहीं है, हैव एक वचन के लिए उपयोग होता है, जबकि है उसके पहले जो आया है वो है अस। अस बहुवचन है, तो ये हैज़ क्यों है? हैज़ एक वचन का क्यों है, हैव क्यों नहीं है? द आंसर इज ईच मतलब एक। हम में से हर एक को 24 घंटे मिले हैं। हम में से सबको 24 घंटे मिले हैं ऐसा नहीं है। अनुवाद क्या होता है? हम में से हर एक को, तो एक की बात हो रही है।
हम सब में एक एक की बात हो रही तो एक वचन हुआ, इसलिए आ गया ईच ऑफ अस हैज़ 24 आवर्स एट आवर डिस्पोजल, टाइम इन्वेस्टेड वाइजली यील्ड्स रिजल्ट्स। समय का अच्छा उपयोग करेंगे तो उसके अच्छे परिणाम आएंगे। यील्ड माने प्राप्त होना, परिणाम आना, इट विल यील्ड गुड। इसलिए टाइम हैज़ टू बी स्पेंट केयरफुली, और इसीलिए टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज टाइम लॉस्ट कैनॉट बी ब्रॉट बैक, बिकॉज टाइम इज़ वेरी पावरफुल, बिकॉज टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। So we must make our time management. We must divide our time. How? We should divide our time in studies, then sleeping, then resting time, then play time, then entertainment time, and other things. But we must be honest. 24 घंटे को हम कैसे डिवाइड करें? Depending on your situation at home, depending on your own determination, depending on your own need, you have to divide time and decide. उसमें सबसे पहले आपको सोने के घंटे देखने होंगे कि पढ़ने के घंटे देखने हैं कि एंटरटेनमेंट के घंटे देखने हैं। आपको तय करना है, you have to decide that I will give minimum 8 hours per day for studies. I will give 6 hours for school and 5 hours for my own study. So 6 plus 5, 11 hours gone in this. Rest of the time I will sleep for 6 hours, 3 hours for entertainment, 2 hours for food, etc. In other words, you are the one who must know how to divide time. Therefore, we should all learn time management. Properly managed time makes everything possible. यदि आपने टाइम मैनेजमेंट ठीक रखा तो सब कुछ संभव है। Make practical timetable, which is possible, which you can practice. Don't make a timetable which looks very good on paper but is not possible. You have to create a space for studies, for your resting time, for entertainment purpose, for meeting friends, etc., for fooding, and also for hobbies and maybe few other things in the day. 24 घंटे को इतने में बांटना है. If we learn to manage our time properly. Now remember, this is a speech being delivered by Natasha to school children in the morning assembly. That means what? How long can an assembly be? Assembly has national anthem, assembly has school prayer, assembly also has few other things. Assembly has activities also, and assembly also includes the time of coming from the class and going to the class. So I think in an assembly, Natasha would be getting about 3 minutes of time to speak. Now in 3 minutes you have to speak 150 words or maybe 200, not more than that. So what all you have to say has to be very crisp. Having said all this, you can also say at the end that if we follow time management, the advantages are we are able to achieve our goals for the day. We are able to do our things in an organized way. We are able to satisfy our mind, our body, and our soul, all three. Because for mind we have certain things, for our body we have games and play, for our soul also we have certain time for prayers, etc. And last but not the least, if we organize well, then at the end of the day, it gives us satisfaction, self-satisfaction. यदि हम time management को करें, so Natasha says that it gives us satisfaction. We will go to our bed happily, without any worry, and enjoy a blissful sleep. एक बहुत अच्छी नींद का आनंद ले सकते हैं यदि हम अपना टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करें. पहली बात तो टाइम मैनेजमेंट ठीक बनाओ. दूसरी बात, यदि बना लिया तो उसको ठीक से लागू करो. और तीसरी बात, यदि लागू कर लिया तो करना चाहिए, then you will have a blissful, आनंदमयी नींद आएगी, and you will be free from worries. आपके मन में तनाव नहीं रहेगा.
ये जो आजकल जो तनाव को लेकर बहुत सी हत्याएं, आत्महत्याएं हो रही हैं, तनाव को लेकर जो डिप्रेशन आ रहा है, तनाव को लेकर जो बहुत सारी मानसिक समस्याएं आ रही हैं, पारिवारिक समस्याएं आ रही हैं, मोस्ट ऑफ इट इज़ बिकॉज वी आर नॉट मैनेजिंग टाइम. Time management will also help you in keeping yourself away from things like mobile and TV. यदि आपने टाइम मैनेजमेंट ठीक ठाक बनाया, उसमें भी आप लिखिए आधे घंटे के लिए मोबाइल पे बैठना, जिसमें आपको YouTube देखना है, सोशल मीडिया देखना है, जो भी देखना. Write down, mention it and do sit with mobile for half an hour. But time management should also help you to say that you should not sit for more than half an hour. आपने अपने से वादा किया. Time management is like a promise to yourself. So Natasha in her speech says that time management is a promise that you make to yourself. A person who doesn't value time always lags behind and ends up in frustration, in everything is messed up in life. And finally, if time management is bad, the real results are bad. Bad results can bring lot of chaos. बहुत सारी समस्याएं bad results से हो जाती हैं. So this way, the article, the speech here by Natasha to be given in the morning assembly is prepared based on certain inputs. In other words, when you write a speech, write down some points. Write down some points. What are the points you want to include? Some 2-3 key sentences, some 2-3 facts, some 2-3 issues, and thereafter solutions. So that makes it about 120 to 150 words, and with that, a speech gets to an end. So this is an example of a speech that we had. Now we come to the second and last example on speech making. Speech writing. As I told you in the beginning, that speech writing and article writing cannot be learned and understood in one day. It is a little long process, and most important is that you must have enough words. You must be a good reader of English language. You must love to read English books. Now, what to read? Read your own course books. You don't have to look for books other than your own books. If you read your own books in English, the advantages are, number one, you are reading a book you are familiar with. Second is, by reading the content of that book, you are learning that subject, that chapter, which may be of any subject. Third, you are learning words which are connected to you by reading that book. And fourth and last is, you will feel, oh, you know many of it, you know much of it, you have seen it, you have read it. These things will give you confidence. You will be reading the same words again and again. That will help you in quick memorization of these words which are of use to you. So here again, just another exercise, and what the question is like in this exercise. Question, read the question carefully. You are Ajay or Anu, if a girl. You are Ajay / Anu. If you are a girl, then you will write Anu head girl. If you are a boy, you will write Ajay head boy. Of Kendriya Vidyalaya, Kanpur. The examiner himself has given your address. So you are head boy, head girl, depending on your own this thing, whether you are a girl or a boy, and you have seen some student littering the school compound and veranda with tiffin leftovers. Littering, to litter matlab phailana. L-I-T-T-E-R, litter. Don't litter your room with waste paper. Don't litter your room with waste paper. अपने कमरे में कचरा मत फैलाओ. My house is littered with all waste items, waste clothes. मेरा जो घर है बेकार कपड़ों से फैला हुआ है, अस्त व्यस्त है. Littered with, litter के बाद हमेशा याद रखेंगे with आता है.
So the examiner says that the whole school is littered with waste, tiffin waste, by students of junior school. जूनियर क्लास के जो बच्चे हैं, they are littering the school compound and veranda with tiffin leftovers. Leftovers मतलब बचा खुचा. It makes the school look unclean, untidy. स्कूल साफ नहीं दिख रहा है, अव्यवस्थित दिख रहा है. Write a speech. Who is writing a speech? Natasha. Ajay or Anu. Write a speech to be delivered in the morning assembly again, advising such students to keep the school neat and clean. That means this speech is in the form of an advice. Advice to whom? To the children of junior classes. Advice by whom? By the head boy or the head girl. Where? In the school. Time? Morning assembly. What can be the speech like? यदि ये बैकग्राउंड है तो स्पीच कैसी होगी? आई एम एड्रेसिंग टू द जूनियर स्टूडेंट. हेड बॉय हेड गर्ल इज एड्रेसिंग जूनियर. एंड व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस? कीपिंग द स्कूल नीट एंड क्लीन. दैट इज द आंसर. बिकॉज इट इज अ मॉर्निंग असेंबली, head boy, head girl thinks that principal is also standing, the staff are also there, the teachers are also there, and of course the students are always there. So how she addresses? Salutation. This address is called salutation. How she addresses? Respected principal, teachers and my dear friends. And then starts her speech or his speech. What are the points which are to be included in this? First of all, what does she see? स्कूल में उसको क्या दिख रहा है, उसके बारे में बोलेंगे. स्कूल में पूरा कचरा दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है सब तरफ कचरा फैला हुआ है. तुम लोगों को कैसा लगता है ऐसे कचरे में? ऐसा क्या सोचते हो तुम लोग इसके बारे में? क्या अजीब नहीं लगता? फिर वो खुद ही पूछती है कि तुमको लगता है कि मैं कुछ अजीब सवाल कर रही हूँ? एक्चुअली मैं तो बात कर रही हूँ सफाई के बारे में. आप बगीचे में जाओ तो चारों तरफ कचरा है. एंड सो ऑन. सो इट स्टार्ट सेइंग कि हाउ डज इट फील टू पास बाय गार्बेज डंप यार्ड. टू पास बाय मतलब बाजू से जाना. ये एक शब्द है, एक फ्रेज है. पास बाय, जस्ट पास नहीं है. तो हाउ डू यू फील पासिंग बाय मी? मेरे बाजू से जाने में तुम्हें कैसा लगता है? राइट. He passed by a bus. A truck passed by him. उसके बाजू से एक ट्रक निकल गया. So pass by. So how do you feel passing by a waste garbage dump? Garbage मतलब कचरा. Waste, garbage, G-A-R-B-A-G. And how does it feel to stroll in a garden? और हमारे गार्डन में घूमने में कैसा लगता है? तुमको लग रहा होगा मैं कैसा सवाल पूछ रहा हूँ. Now you feel what question, weird question I am talking about. No one would despise taking a stroll in the garden. किसी को भी नफरत नहीं होगी गार्डन से जाने की. बट जहाँ तक गार्बेज से निकलने का सवाल है, no one would like to pass by garbage dump yard. One would rather avoid looking towards it. One would press his nose while passing by the garbage. And so you must be thinking, why I presented you with such a contrast. मैंने ऐसा कंट्रास्ट आपको क्यों बताया है? कंट्रास्ट मतलब विरोधी बात. कौन सी विरोधी बात? एक गार्डन की और गार्डन बनाम गार्बेज की. तो मैं क्यों कर रही हूँ तुम सोच रहे होगे. ऐसा कह के उसने भूमिका बांधी. इन अदर वर्ड, इन ए स्पीच यू कैन स्टार्ट विथ सम काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन, सम काइंड ऑफ बैकग्राउंड. Right in the beginning, she never said that I am here to talk about cleanliness. Another way of giving a speech is, first you just go on touching the minds of people, the listener, and then tell them what you are talking about. उनसे पूछो कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, आपको समझ में आया?
So her speech is like that, where then she says, I presented to you such a contrasting friends, it was just to differentiate between a clean and an unclean atmosphere and an unclean surrounding. साफ और गंदे माहौल के बीच की तुलना मैं करना चाह रही थी। अब तो ये उसने बता दिया कि साफ और गंदे माहौल के बारे में क्या चिंता है उसकी। देन टॉपिक क्या है, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है जूनियर बच्चों के द्वारा वेस्ट लेफ्ट ओवर लिटर किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है। लेफ्ट ओवर मतलब जूठा खाना, बचा हुआ फैलाया जा रहा है। कहाँ? वेरेंडा में और स्कूल में चारों तरफ। नाउ द हेड गर्ल और हेड बॉय स्पीक्स दैट friends, I often find the students of junior classes littering the school compound with tiffin leftovers and torn pages, pencil scraps, etc. जूनियर स्कूल के बच्चे बचा खुचा खाना फेंक देते हैं, चावल के टुकड़े, दाने, रोटी के टुकड़े। उसके साथ ही पेंसिल को शार्प करते हैं, जब तो शार्पनर करने के बाद जो कचरा निकलता है उसको फेंक देते हैं। उसके बाद वो कचरे जो कागज़ रहता है, जो काम का नहीं रहता, उसको फाड़ देते हैं, उसको टुकड़े टुकड़े बनाकर उसको फेंकते हैं, उड़ाते हैं। सो द होल स्कूल इज़ लिटर्ड विथ all these things, and that makes the place very dirty, very untidy. मैंने ये भी देखा है that these junior students also spit. To spit मतलब थूकना। ऐसा होता है कि नहीं आपके स्कूल में? How many of us have not done spitting? How many of us have not thrown away the pencil sharpener waste? How many of us not? This is my question to you the listener, those who are watching this video. Just find out. And by doing all these things, we have made our surrounding unclean. हमने अपने ही आसपास के माहौल को गंदा किया. So this head boy, head girl is trying to give advice to these children that some of us have even spitted around and some of us even lack the toilet culture. हम में से बहुत लोगों को टॉयलेट कल्चर भी नहीं आता। टू लैक मतलब कमी होना। आई लैक कॉमन सेंस, मेरे में कॉमन सेंस की कमी है। यू लैक कॉन्फिडेंस, तो में आत्मविश्वास की कमी है। ही लैक्स द स्पिरिट, द एनर्जी, उसमें एनर्जी की कमी है। तो टू लैक, LACK, not LAKH. So to lack means kami. So I also find that many students lack toilet culture. What is the meaning of the word toilet culture? यदि ये शब्द मुझे ना मालूम हो टॉयलेट कल्चर, तो मुझे लिखना पड़ेगा कि टॉयलेट में जो ऐसा करते हैं, गंदगी करते हैं, जो वॉश बेसिन में धोते नहीं, जो हाथ की सफाई नहीं करते, जो पॉटी को और यूरिन को यहाँ वहाँ फेंक। नो, बाय सेइंग टॉयलेट कल्चर, the head boy or the head girl has said many things about the toilet. Toilet culture means the culture of keeping it clean, the culture of washing hands, the culture of closing the tap, the culture of ensuring that the commode is flushed, the culture of keeping the floor clean. This is what is the culture. We don't close the tap. We break the tap at times. We don't bolt the door after we have used the toilet. We don't flush. These are the things which are said by this. So I have seen all these things. I therefore now last is advice. I therefore appeal to all of you to help the school in keeping the campus clean, in keeping the surrounding clean, and enjoy the beauty of the nature around. By keeping the campus clean, we are keeping ourselves clean. कैंपस की सफाई रख के हम सुनिश्चित कर रहे हैं हम खुद साफ हों। What we are learning in the school, we are doing the same thing at home. So let us stop these junior children from doing any of these things. हम बड़े लोगों में से कोई भी यदि छोटे बच्चों को ऐसा करते देखता है तो हम उसे रोकें. It is the duty of all elderly children.
and then she warns, she advises she appeals to the junior children not to do. She appeals to the senior children to see that these children don't do such thing. And so that's how this speech gets over, because the time duration may be 2 minutes or 3 minutes for the speaker. And with that, our second speech comes to an end. Mind you, it has to be very short, to the point, crisp, as I said repeatedly, and you must not deviate. Sentences should be short and very clear. Hit the nail in the target. जो खीला है उसको जहाँ मारना है लक्ष्य में वहीं मारे, दाएं बाएं ना मारे। स्पीच में तभी बात सीधे जाती है सामने। So this is how we have done today. Articles, we have understood them in detail, and we have also done the second and the last part of long composition, that is the speech making, speech writing. So with that, your long composition comes to an end.